Video we will discuss about stroke. First of all, we will discuss anatomy of brain. For brain, this is prosencephalon, and cerebrum has two hemispheres connected by corpus callosum lobes. There are four lobes: frontal lobes, parietal lobes, occipital lobes, and temporal lobes. सबसे पहले हमने फोरब्रेन को देखा कि फोरब्रेन क्या होता है। ये सेरिब्रम हैज़ टू हेमिस्फीयर्स जो कि कनेक्ट किए जाते हैं कॉर्पस क्लोसम से। ठीक है। सेरिब्रम में हमारे पास फर्दर दो हैज़ टू हेमिस्फीयर्स, ईच हैज़ ए कॉर्टेक्स। जिनके पास है कॉर्टेक्स होता है, ईच कॉर्टेक्स हैज़ फोर लोब, और हर कॉर्टेक्स के पास फोर लोब्स होते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास नंबर टू थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन एंड हमारे पास हाइंड ब्रेन, जिसे हम कहते हैं रोम्बेनसिफलोन, पोन्स, मेड्यूला ओब्लंगटा, सेरिबेलम। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है। ब्रेन स्टेम में हमारा हम स्टडी करते हैं हार्ट रेट, जो ब्रेन से कनेक्टेड होता है, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग, जीआई फंक्शन, कॉन्शियसनेस। और जो राइट सेरिब्रम होता है, कंट्रोल मसल्स ऑन द लेफ्ट एंड वाइस वर्सा। जो राइट सेरिब्रम होता है वो हमारे जो है मसल्स को कंट्रोल करता है ऑन द लेफ्ट। ठीक है। इस तरह सेरिबेलम जो होता है मसल कोऑर्डिनेशन में और बैलेंस में रोल प्ले करता है। और विजन में ओसिपिटल का रोल होता है। एंड पैरेटल के अंदर सेंसरी इंफॉर्मेशन, और जो हमारे पास फ्रंटल होते हैं मूवमेंट एंड एग्जेक्टिव फंक्शन वगैरह, और टेम्पोरल में हेयरिंग, मेमोरी, फेशियल रिकग्निशन एंड स्मेल एंड लैंग्वेज। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एनाटॉमी। The brain and spinal cord are surrounded by three membranes, which form the outside inwards are dura mater, arachnoid matter and pia mater। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, डोरा मैटर है, arachnoid matter है और pia mater है। Between the arachnoid matter and the pia mater and the subarachnoid space is found the cerebrospinal fluid, जिसे हम CSF कहते हैं। arachnoid matter और pia mater के इन बिटवीन जो हमारे पास होता है subarachnoid space। ये डायग्राम सर्कल ऑफ वेलस की है। इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज, ये हमारे पास है। इसी तरह ये नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोडक्शन। स्ट्रोक इन्वॉल्व्स अब्रप्ट ऑनसेट ऑफ फोकल न्यूरोलॉजिक डेफिसिट दैट लास्ट एट लीस्ट 24 आवर्स, जो कि 24 आवर्स लास्ट करता है, एंड इज प्रिज्यूम टू बी ऑफ वास्कुलर origin. A stroke is a medical emergency and prompt treatment is crucial. Early action can reduce brain damage and other complications. A stroke occurs when the blood supply to a part of brain is interrupted or reduced, preventing brain tissue from getting oxygen and nutrients. Types of stroke. Stroke can be either ischemic and hemorrhagic. In ischemic stroke, blood clot blocks blood flow to part of the brain, and hemorrhagic stroke, artery ruptures causing bleeding around the brain. Next, we have pathophysiology. Ischemic stroke, 87% of all the strokes, cerebral 87%, and cerebral atherosclerosis is a cause in most cases, but 30% are of unknown etiology. Occurs either due to local thrombus formation or emboli occluding a cerebral artery. Emboli arise either from an intra or extracranial arteries. However, 20% of ischemic strokes arise from the heart. 20% heart से originate होती हैं। Then we have carotid atherosclerotic plaques may rupture resulting in collagen exposure, then platelet aggregation, thrombus formation, and clot may cause local occlusion or dislodge and travel distally, eventually occluding to a cerebral vessel. In cardiogenic embolism, stasis of blood flow in the atria
or ventricles leads to formation of local clots that can dislodge and travel through the aorta, the cerebral circulation. Thrombus formation and embolism result in arterial occlusion, increasing cerebral blood flow, causing ischemia, ultimately infarction, distal to the occlusion. An infarct is the irreversible death of tissue due to a lack of blood supply. It is the ischemic core. And a pneumombra is the surrounding area of brain tissue that is at risk of becoming an infarct. It is functionally impaired but can potentially be saved if blood flow is restored to the area. Then we have transient ischemic attack. Mini stroke, reversible neurological deficit caused by temporary brain ischemia, serving as a warning for future stroke and an opportunity for early intervention. Caused by temporary blockage of blood flow to the brain, last 24 hours, no permanent brain tissue damage occurs. Hemorrhagic stroke. 13% of strokes, subarachnoid hemorrhage, and intracerebral hemorrhage.